Hello students. So welcome. Now let's study the redox reactions. Okay. So here I'll only discuss in redox reactions I will only discuss the oxidation number. What is oxidation number? Then oxidation and reduction, oxidizing and reducing agent in terms of oxidation number, and then balancing a chemical reaction using oxidation number method. Okay, so let's get started. So students, the first question is what are redox reactions, isn't it? You must be thinking. In standard 10th you must have studied a little bit about this, and you also know that how rust is formed. We know that rust is another name for iron oxide, which occurs when iron or an alloy that contains iron, like steel, is exposed to oxygen and moisture for a long period of time. Then, over time, what happens? This oxygen combines with the metal at an atomic level, forming a new compound called an oxide. So, basically, this iron metal is actually oxidized, okay, and to form iron oxide, which is known as rust, Fe2O3, right? Okay. Similarly, the fading of colors from your clothes, burning of different kind of fuels, bleaching, or any burning of any combustible substance such as wood, coal, to obtain energy for commercial, domestic, and transport purpose. These are all examples of oxidation and reduction, that is redox reaction. Okay, so there have been different definitions of oxidation and reduction according to different concepts. The first one was the classical concept that you have studied, I think. Classical concept of oxidation and reduction, right? Then came the electronic concept. Then all two had some limitations. Because of that, one new concept, that is oxidation number, came into being. All right, so let's see what classical concept is exactly. Just have a quick revision. According to this classical concept of oxidation, oxidation is a process of addition of oxygen or any electronegative radical, or removal of hydrogen or any electropositive radical, and reduction is basically the just the opposite, addition of hydrogen or any electropositive radical, or removal of oxygen or any electronegative radical. So what is redox reaction? Redox reactions are those reactions that involve the simultaneous Redox reactions are those reactions which involve the simultaneous oxidation and reduction. As the name itself says, red for reduction, ox for oxidation. Okay, so those reactions that involve oxidation and reduction as its two half reactions, they are called redox reaction. Or you can say the redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction goes on simultaneously. For example, just take this example. PbO plus C gives Pb plus Co. Okay, so here just see, you can clearly see that oxygen in the reactant side, this Pb has oxygen, but in the product side it doesn't. It loses the oxygen. So that is why reduction is taking place. And here the carbon has taken the oxygen. That is why oxidation of carbon is taking place. Okay, and all these two reactions takes place simultaneously. Okay, it means that if in a reaction a substance is oxidized, then another gets reduced at the same time, or vice versa. Or we can say that oxidation reactions are complementary. Okay, that is, they always go hand in hand or side by side. Fine. Okay, so now let's move on to the concept of oxidation number. All right, let's study the oxidation number, what it is exactly.
Okay, so oxidation number is basically the formal charge. What? It is the formal charge, okay, which is present in an atom in a species. Okay, now oxidation number, why it came into being? Because in case of some covalent compounds, that is H plus Cl gives HCl, right, or H2, in some covalent compounds, this concept of electron transfer was basically unable to explain the redox changes or electron shift in some cases. To explain these changes, a new concept called oxidation number was introduced. Okay, so what exactly oxidation number is? As I said, it is the formal charge. Okay, and it is defined as the charge that an atom of the element has in its ion form, or appear to have when present in the combined state with other atoms. Or it can also be like this, that it is the charge that an atom appear to have in a compound when all other atoms are removed as ions from the compound. Okay, just for example, take this example of H plus plus Cl minus, it gives HCl. Okay, so here what is the charge over hydrogen? It is plus. That is why I can say the oxidation number here is +1, and that of Cl, I have one negative charge, so I can say that it is -1. And here when HCl is been formed, +1 plus -1, it becomes 0. All right, so that is what I'm saying, that oxidation number is the formal charge that an atom of the element has in its ion, or appear to have when present in the combined state with other atoms. Okay, so now you must be thinking that why have I have written here +1, here -1, and here 0. Okay, so for that there are some rules for calculating the oxidation number which you need to know. All right, so you can see here that there is an electronegativity difference between Cl and H plus and Cl minus. We know that chlorine is very electronegative. Okay, so that is why, because of this electronegativity difference, we can say that a charge is being developed over here. And one more thing, that there are some other atoms also in case of polyatomic molecules where there are several atoms in a combined form. It is not an easy task to calculate the oxidation numbers. That is why a set of rules has been given to calculate the oxidation number of an element in a given compound or ion. So what are those rules? Just check it out one by one. Okay, so rule number one states that the oxidation number of an atom in its free or elementary state or in any of its allotropes is 0. Means that the oxidation number of oxidation number of hydrogen, in H2 is 0, will always be 0. This is a rule, you have to take it. And in case of S8, it will be 0. All right, in case of N2, the oxidation state of nitrogen will be 0. In case of P4, the oxidation state of phosphorus is 0. Or if I take carbon in the form of an allotrope, the oxidation state will be 0. Okay, are you getting my point? All right, let's move on to the next rule. Rule number 2. In case of ions, if I am talking about ions which have only one kind of atoms, the oxidation number of each atom is equal to the charge present on the ion. For example, in case of Na plus, Mg2 plus, Fe3 plus, Cl minus, O2 minus, you can see the oxidation states are respectively +1, +2, +3, -1, -2. It means that if you have an ion, say Na plus, it has one positive charge, so the oxidation number will be +1. Okay, if I take Mg2 plus, it has two positive charges, so the oxidation state will be +2, and like that. Okay, this is a rule, you have to remember that. Rule number 3. The oxidation state of alkali metals. The oxidation state of alkali metals, all right, in all of their compound is always +1.
the oxidation state of alkali metals, that is group 1 elements, in all of their compound is always +1. Similarly, in case of alkaline earth metal, which are group 2 metals elements, it is always +2. And for aluminium, oxidation state is always +3. Alright. Now moving on to the next rule, rule number 4. This is a very important rule. Alright. The oxidation state of oxygen in most of its compounds is -2. ठीक है, नॉर्मल केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वी विल टेक -2, बट देर इज़ एन एक्सेप्शन एंड यू हैव टू रिमेंबर द एक्सेप्शन. In case of peroxides and superoxides, the oxidation state of oxygen is -1. In case of peroxide, it is -1, and in case of superoxides, it is -half. Okay, now let's see here. Peroxide, you must be thinking that what are peroxides, right? Example is H2O2, hydrogen peroxide. You must have heard of this name. There is this type of linkage. You can see this is known as the peroxo group. Okay, and here oxygen forms bond with its own atom. This is known as the peroxide linkage. All right, so here it is +1. The charge in oxygen, hydrogen sorry, is +1, and that of oxygen is -1. All right, now another term I used is superoxide. Okay, so superoxide is a compound that contains the superoxide anion. Okay, so here just take an example of KO2, potassium superoxide. You can see potassium, and here I have 2 oxygen. All right, so here how many electrons are there over in this oxygen? Just see, and here it is 5, 6. Right, just see here, potassium will take a positive charge. All right, and it will give 1 electron, provide 1 electron to this electronegative oxygen. This 1 electron that potassium provides, it actually rotates, or you can say 1 by 1 it goes to this oxygen. So if it goes to this oxygen will develop a minus charge, and if that electron goes to this oxygen will develop minus charge. Okay, so that is why here एक टाइम पे एक ही ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा और एक ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. जब जिसका ऑक्टेट पूरा होगा उस पर माइनस चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बारी बारी से ये दोनों ऑक्सीजन पे जाएगा. तो इसी को कहते हैं सुपर ऑक्साइड, और इसी वजह से ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1/2. आई बात समझ में? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो अब याद रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ. ओके, वन मोर थिंग, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीजन का इन OF2 इट इज़ +2. OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है +2. वाई इट इज़ सो? जस्ट सी हियर फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन. ये आपको पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ऑक्सीजन से. तो इसी वजह से फ्लोरीन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ऑक्सीजन से, है ना. फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे यहाँ पे एक बार +1, यहाँ पे एक बार +1, दोनों को मिला दो +2. और ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के टाइम फॉर्म में रहेंगे. ठीक है, तो टोटल देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है. फ्लोरीन का भी हो रहा है, दोनों फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है. तो ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, दैट इज़ वाई ये अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देता है, जिसकी वजह से उस पर +1 चार्ज आता है. ठीक है, +1 +1 +2. ये बहुत रेयर केस है. ठीक है, अच्छा, वन मोर केस इज़ देयर इन O2F2. O2F2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का वो होता है +1. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है +1. ठीक है, आई बात समझ में? ऑलराइट, चलिए रूल नंबर 5. जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हाइड्रोजन का, द ऑक्सीडेशन स्टेट
जो होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, इट इज़ जनरली +1। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इट इज़ +1, बट देर इज़ एन एक्सेप्शन। what exception is there? If we are taking metallic hydrides like NaH, okay, CaH2, etc., in these hydrides the oxidation state of hydrogen becomes -1 because metal is there, इसका +1 होगा तो हाइड्रोजन का तो -1 होना ही है, ठीक है। तो हाइड्राइड्स जब भी रहेगा उस केस में जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, लेकिन अगर नॉर्मल स्टेट में है हाइड्रोजन तो उसका उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट +1 होगा, ठीक है। ओके, रूल नंबर 6, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज ऑलवेज -1। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा फ्लोरीन का इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज ऑलवेज -1। जो दूसरे हैलोजेंस होंगे दैट इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल्सो एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दैट इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू, ठीक है। अगर ऑक्सो एसिड्स हैं या ऑक्सो अनायंस हैं उस केस में हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन दे एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, दे एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। Now you must be thinking that what are oxo acids and what are oxo anions? See, oxo acids are those compound that contain oxygen, ठीक है। Typically it is a compound that contains hydrogen, oxygen and at least one any other element, that is H2SO4. It has hydrogen, oxygen and one other element HNO3. These are oxo acids, okay। तो जब भी ये है फ्लोरीन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अगर किसी ऑक्सो एसिड्स के साथ जुड़े होंगे उस केस में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सो अनायंस क्या कहा मैंने? ऑक्सो अनायन बेसिकली एक आयन है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फाइट, दीज आर ऑक्सो अनायंस, ओके। चलो ये रूल क्लियर है। नेक्स्ट, रूल नंबर 7, the algebraic sum of the oxidation numbers of all the atoms present in a compound must be equal to 0, okay। जो algebraic sum हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स का सारे आटम का वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, जहाँ पे बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब है ग्रुप ऑफ एटम दैट एक्ट एज एन आयन, ऐसे बहुत सारे एटम्स जो कि आयन की तरह एक्ट करेंगे उसको पॉलीएटॉमिक कहेंगे, ठीक है। जो एल्जेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द आयन इट मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। जैसे देखो यहाँ पे CO3 2-, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का, ऑक्सीजन का, वो ऐसा होना चाहिए कि वो इस चार्ज के बराबर आए, ठीक है। बार ये बात समझ में, जैसे देखो यहाँ पे CO3 2- में कार्बन का कितना होता है +4 एंड ऑक्सीजन का इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड -2 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू आपका -2 करना है, देखो होता है कि नहीं। 6 इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू -2, देखा ना, आया ना इक्वल टू, तभी वो स्टेबल होगा, ठीक है। -2 के इक्वल आया। So in case of polyatomic ion, the algebraic sum of oxidation number of all the atoms present in the ion must be equal to the charge on the ion, okay। अच्छा, यहाँ पर एक और देखो दिखा हुआ है, metals generally exhibit positive oxidation state whereas the oxidation state in case of non-metals may be positive or negative. Moreover, transition element they exhibit variable oxidation state. ये बहुत सारा oxidation state show करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा फॉर फर्स्ट 2 ग्रुप्स वो ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। ग्रुप नंबर मतलब जैसे देखो एल्कली मेटल्स का ग्रुप नंबर क्या है 1 है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप नंबर 2 है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अदर ग्रुप एलिमेंट, जैसे ही हम लोग 3, 4 आगे बढ़ते हैं, 4 से हम लोग जनरली लेते हैं, उसको हम लोग ग्रुप नंबर -10 करते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर -10 करते हैं, ऑलराइट। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं
अच्छा, वन मोर थिंग इज़ देयर दैट व्हाट इज़ वैलेंसी। यहाँ देखो, यहाँ मैंने दिखा है ग्रुप नंबर 13 का भी ऐसे +3 होता है, 14 का उसी तरह से 10 - 4 करो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ये +4 इधर, +5 इधर, +6 एंड +7 लाइक दिस, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन SF6 की अगर हम बात करें, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे, जो उनका ग्रुप नंबर है उसको माइनस कर देंगे 10 से, तो आया 6, तो वो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, मतलब इतना हाईएस्ट, इतना ऑक्सीडेशन नंबर पहुंच सकता है। ठीक है, तो सल्फ़र का अगर कहीं पे आपको दिखे +7 ऑक्सीडेशन नंबर तो वो गलत होगा। अगर आपका +7 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय तो वो गलत होगा। ठीक है, आई बात समझ में। हाईएस्ट जो है वो आपका +6 ही आएगा सल्फ़र का। ठीक है, उसी तरीके से Cl का +7 एंड सो ऑन। चलिए, तो अब एक बात करते हैं हम लोग, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में एक डिफरेंस देखते हैं। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या देखा हमने, वो होता है चार्ज विच एन एटम हैज़ और अपीयर्स टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, वैलेंसी जस्ट एक नंबर है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैं कार्बन का वैलेंसी पूछूँ, आप बोलोगे 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी पूछूँ, क्या होता है ऑक्सीजन का वैलेंसी, सोचो क्या होता है, नहीं बताऊँगी मैं। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में जो होता है वो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, राइट। एंड जैसे मैं पूछूंगी अभी ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का बताओ, बताओगे +4, ऑक्सीजन का क्या होगा, भी बताया था -2। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी फ्रैक्शनल भी आता है। ऑलराइट, ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग, वैलेंसी इज़ बेसिकली अ नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द चार्ज। ऑलराइट, अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या पहले हम स्टेप्स सीखते हैं कि कैसे हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ अ गिवन कंपाउंड और आयन, लीविंग सम स्पेस बिटवीन द एटम्स। ऑलराइट, secondly, write the oxidation state of each element above its atom and write down X above the atom and oxidation state of which we can find out. Multiply the oxidation number of each element with the number of atoms to that element present in the compound, and then you have to equate and you have to solve for the value of X. For example, you have to calculate the oxidation number of Mn in KMnO4. ठीक है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है KMnO4 में। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड, ये हमने लिख लिया। सेकेंडली, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट अबव इट्स एटम। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हम जानते हैं, इट इज़ एन एल्कली मेटल +1। ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था, इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इट इज़ -2, तो -2 लिखेंगे। Mn का हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग X मानेंगे। ठीक है, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट विद द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे पोटेशियम में कितने एटम्स हैं, 1 है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, प्लस यहाँ पे कितना है, Mn भी कितना है हमारे पास, 1 है, तो इसको हम लोग X मानेंगे, प्लस 4 × -2, 4 ऑक्सीजन आटम है और हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ठीक है, नाउ यू हैव टू इक्वेट, राइट। अब इसको इक्वेट करो, इक्वेट करोगे और इसको =0 लिखना है। =0 क्यों, 0 के बराबर होना चाहिए ये। ऑलराइट, यू विल इक्वेट, मतलब =0 इसलिए लिख रही हो क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यू डोंट हैव एनी चार्ज ओवर हियर, दैट इज़ वाई यू आर राइटिंग =0। ओके, now let's write it, 4 × 2 = 8 = 0 and it will be 7. So oxidation state of manganese in this case is +7. Okay,
इज इट क्लियर? राइट, ओके. सो हाउ इट इज़ 7, इसको ऐसे भी देख सकते हो. मैं इसका अगर बनाऊंगी स्ट्रक्चर Mn, okay, how many oxygen are there? 4 ना. So 1 2 3 and 4 एंड इसके साथ K प्लस जुड़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ देखो इस ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है एंड इस Mn पे +2, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ठीक है, अगेन यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड है. यहाँ पे -2, यहाँ पे +2. अगेन मैंगनीज का यहाँ पे भी +2 -2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए +1 -1. तो अगेन 2 + 2 4 5 6 7 आ गया ना Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7. ठीक है, बेसिकली कितना बॉन्ड बनाया हुआ है वो भी हमें पता चल जा रहा है इसके साथ. ठीक है, ऑलराइट, बहुत आसान है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं. फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इन NO3-. NO3- है. ओके, सो नाउ आपको इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. अगेन यू हैव टू लेट दिस X, तो लिखेंगे X प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है. कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 3 है, तो 3 × -2 नाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो चार्ज है हमारे पास, नाइट्रेट है ना, तो इसको इसके पास एक चार्ज है तो -1 का चार्ज है, तो यहाँ लिख देंगे -1. ठीक है, तो x -6 = -1 और x = -1 + 6, x = +5. तो NO3- का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का इसमें +5. ऑलराइट, क्लियर है. अब बन जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर. कैसे कैलकुलेट करते हैं, आसान है ना. ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है. ऑलराइट, तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं. चलो, वन मोर क्वेश्चन. Na2S2O7. okay, here you have to calculate the oxidation state of sulfur. now again just see this, Na का कितना होता है +1, 2 Na है तो 2 × +1 प्लस यहाँ पे कितने सल्फ़र है हमारे पास 2 है ना, तो इसलिए हम इसको 2x मानेंगे. इसी का हमें कैलकुलेट करना है. +7 × -2 = 0. नाउ 2 + 2x - 14 = 0. 2x = 12 और x = +6. मतलब एक सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा. ठीक है, आई बात समझ में. इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है. ओके, देयर विल बी मेनी अदर क्वेश्चंस आल्सो. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग how to calculate the fractional oxidation state. Okay, so that's all for today. Thank you.